Hello students, this is Akshita, your educator. I welcome you all on the platform of Global Online. So as we know friends, Global Online platform has launched a complete course for upcoming Maharashtra B.Ed CET entrance examination 2023. And in this particular series, we'll be discussing the whole syllabus from all the units of the B.Ed CET syllabus. Okay, so before moving into the video, let us discuss what are the features of this particular course launched by Global Online platform. So, in this particular course, you will be provided with the full syllabus video lectures, 10 full syllabus test series, full syllabus complete notes, 2000 plus MCQ question bank. All above features will be provided to you in the course fees of 1000 rupees. If you are preparing for ELCT also along with B.Ed CET, now ELCT English language content test is for the students who are going to appear or who are going to or who want to get admission in the English medium B.Ed colleges. They have to give this exam of 50 marks of ELCT mandatorily. Okay, so if you want the compiled course of B.Ed CET plus ELCT, it will be provided to you in the course fees of 1500 rupees. So if you are preparing for B.Ed CET, go for the course of 1000 rupees. B.Ed CET along with ELCT, then the course fees of 1500 rupees. Simply you have to contact us on this given WhatsApp number, which is 8179138413. Else you can download the Global Online application, install it from Play Store. Once you'll install it, open the application, you will find such type of interface. In this particular interface, if you look downwards, there is an icon named as Store. Click on it, you will move to the page called as My Courses. In this particular page, there is a search tab. In this particular search tab, you have to type CET. Once you will type CET, course along with the fees will be displayed downwards. Okay, so just get enrolled to the course and boost your preparation for the entrance examination of the B.Ed. Follow the comprehensive course by the Global Online platform and get maximum marks and guaranteed selection. Okay, so let us begin with the today's lecture. टुडे ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फिगर ऑफ स्पीच. कुछ फिगर ऑफ स्पीच जो छूट चुके थे वो आज मैं कवर अप करूँगी, और आज का फिगर ऑफ स्पीच कवर होने के बाद विल बी स्टार्टिंग अप विद द न्यू टॉपिक फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड. ओके, सो ओके, so in today's lecture we'll be discussing about the figure of speech named hyperbole. Okay, so hyperbole is something in which we can find the exaggerated statements, spiced statements. Okay, so hyperbole is a figure of speech literary device जिसके अंदर exaggerated statements आपको मिलेंगे. Example देखना, a very famous example of Romeo and Juliet, where Romeo utters of Juliet that the brightness of her cheek would shame those stars. So the brightness of Juliet is compared with the brightness of the stars, and Romeo is saying that her brightness is more than that of the stars. Like he means to say that the brightness of the Juliet is more than that of the stars, such that the stars would feel shame on them, right? So here the exaggeration of the beauty of Juliet is expressed in this statement, exaggerated statement. Okay, हद से ज़्यादा उसको क्या बोल सकते हैं, exaggerated करना is nothing but the hyperbole. Okay, some of the examples I have mentioned here. Before that, we will just read out what I have just given in the form of points to you here. Hyperbole, the exaggerated statements that aren't meant to be taken literally, have spiced up the English language for eons. So यहाँ पे जो statements दिए जाते हैं that they are exaggerated, and the second thing is that उनका literal meaning कभी भी हम नहीं लेना है. Okay, हमें कभी भी उनका literal meaning नहीं लेना है. Literal meaning in the sense we can शब्दशः अर्थ. Okay, so here there are some of the examples. Look now, here I have given that the Shakespeare used a theme to poetically bring his words to life. In Romeo and Juliet, Romeo utters of Juliet, मतलब रोमियो जूलियट के बारे में बोल रहा है that the brightness of her cheeks would
shame those stars. Okay, some of the more examples regarding the hyperbole are, I am so hungry I would eat a horse. So अगर इसका लिटरल मीनिंग निकालेंगे दैट आई एम सो हंग्री कि मैं हॉर्स खा जाऊंगी, ऐसा थोड़ी रहेगा, नहीं, इसके लिटरल मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं हम. दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट बिल्ड to take the literal meaning out of them. These are just the exaggerated statement. These are just the exaggerated statement, overstatement we can say. I am so hungry that I could eat a horse. Next example, she is as old as hill. She is as old as hills. So here her oldness is compared to that of the hills, right? So इतनी ज़्यादा बूढ़ी है वो that she is as old as hills. I walked a million miles to get here. I walked a million miles to get here. It means I have worked hard. मैंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है. that I have walked a million miles to get here. यहाँ आने तक के लिए मैंने मिलियन माइल्स चला है. लिटरल मीनिंग मिलियन माइल्स एक्चुअली चल रहे हैं हम नहीं. इट मीन्स दैट you have actually work hard to crack the examination. You have work hard to do your job. Okay, so यहाँ पे I have walked a million miles does not mean that it is really mean to be, is सिर्फ exaggerated statement है. She can hear a pin drop a mile away. I died of embarrassment. He is as skinny as the toothpick. टूथपिक के जितना वो स्किनी है. सच में ये एक लिटरली हम इसका मीनिंग निकाल सकते हैं नहीं, क्योंकि लिटरल मीनिंग निकालेंगे तो ऐसी बॉडी कोई एग्जिस्ट करती नहीं है मैम, ठीक, ह्यूमन बॉडी. बट दिस स्टेटमेंट इज हाइपरबोल जहाँ पे एग्जैगरेशन हमें दिख रहा है सेंटेंस के अंदर. शी इज़ एज टॉल एज अ बीन पोल. शी इज़ एज टॉल एज अ बीन पोल. It's raining cats and dogs. These are some of the examples of the hyperbole. Just keep in mind that इसका कोई literal meaning हम नहीं निकालने वाले हैं. Just वो एक statement है जिसके अंदर spice up किया गया English language के लिए, और these are the exaggerated statements. So next figure of speech is onomatopoeia. Onomatopoeia. Okay. So here it is a figure of speech. It is a figure of speech that uses words to describe the sound made by all living things, including people, animal, birds, and all inanimate objects. Okay. Before understanding this, let us see some of the examples. Okay. The ship went ba. Best part about the music class is that you bang on the drum. It is unusual for a dog to bark when visitors arrive. ये 2-3 एग्जाम्पल्स पढ़ के समझ आ रहा है कि कोई साउंड आ रहा है. इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से वी कैन गेट अ पर्टिकुलर साउंड. दिस स्टेटमेंट्स, दिस वर्ड्स बा, बैंग, बार्क, these are describing the sound. So ba is the sound describing the sound of fish. Bang is a sound that is describing the sound of what? Drum. Similarly, bark is describing the sound of what? Dog. So इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर तीनों भी एग्जाम्पल्स में अगर अच्छे से देखेंगे हम, दैट सर्टेन वर्ड्स आर सीन लाइक बा, बैंग एंड बार्क दैट आर मेकिंग साउंड्स, दैट आर डिस्क्राइबिंग द साउंड्स ऑफ any animal, of any instrument, that is inanimate object, or any bird, or any animal, or any people we can say. So this is how onomatopoeia is used here. Okay, you can pronounce it as onomatopoeia or onomatopoeia. Okay, depending upon you. मैं जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहती हूँ मैं उसी में बात करती हूँ, बिकॉज दिस थिंग्स सिर्फ दिमाग में रखना है, प्रोनाउंसिएशन आपको ज़्यादा कोई पूछता नहीं है. ओके, सो साथ ही साथ साइलेंस योर सेल फोन सो दैट इट डज नॉट beep during the movie. Not the beep sound is of cell phone. Okay, the beeping sound is again describing the volume or the sound of the cell phone. Similarly, dad released a bulge from the pit of his stomach. So bulge is making the sound of what? Basically stomach. The bridge collapsed, creating a tremendous boom. So here bridge is collapsing. So collapse का जो आवाज़ आ रहा है, destruction का जो आवाज़ आ रहा है, that is boom. Okay, so here collapse का जो word है वो कौन describe कर रहा है? The sound boom. Similarly, bow wow. So bow wow is the sound describing the
living thing, that is the animal. Okay, so this is how, these were some of the examples of onomatopoeia. So you can go through the all examples when I will share you the PDF. Okay, so the next figure of speech is cliche. Okay, so cliche is a phrase or idea that has been used to the extent that it has lost its original meaning. Okay, it has been used to an extent that it has lost its original meaning. उसका originality का जो meaning है, it has lost is because it has been used at an very extreme level. Okay, so now look here, there are some of the examples that we use in our day to day life regarding the cliche. Cliche is again something जहाँ पे अपन exaggeration देख रहे हो. Okay, so look here now. Even though she is 80 years old, she is still sharp as a tack. This is again representing a cliche. Her advice is to live and let live. Again a cliche. Exaggeration दिख रहा है, live and let live. Okay. My father always says that it's another day, another dollar. My dog is as dumb as a doorknob. He's so unmotivated that he is just sitting like a bum on a log. So these are showing the cliche or the idea or a phrase. Okay, so that is nothing but a cliche. So go through all the examples. Look here, my boyfriend says that the absence makes the heart grow fonder. Okay, ऐसे examples आपको बहुत जल्दी समझ आते हैं. Okay, other than दूसरे examples, तो ये दिमाग में रखना है that absence makes her absence, यहाँ पे hurt insert करना है, her not hurt. My boyfriend says that her absence or my absence, not her absence makes the heart grow fonder. Okay, so this is how you have to keep in mind. जो cliche idea है एक, okay, एक्सट्रीम लेवल को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए उसका मीनिंग जो है वो एक्सट्रीम्ड हो गया, वी कैन से. आयरनी, it is a figure of speech in which there is a contradiction of expectation between what is said and what is really meant. Okay, so here what is said and what is really meant, इसका meaning समझते हैं पहले. So we'll see 3 examples first. For example, a fire station burns down, a marriage counselor files for a divorce, the police station get robbed. Look at all the 3 examples. The fire station burns down. So in this particular example, this is an unexpected because one would assume the fire chief would keep his own building safe. Look here, a fire station burns down. We know fire station is what? Fire station is for the safety. कहाँ पे आग लग गई, then fire station people come, they help us. Okay, so उसी फायर स्टेशन के अंदर आग लग रही है, फायर स्टेशन बर्न्स डाउन. सो फायर स्टेशन के एक्सपेक्टेशंस क्या है? फायर स्टेशन इज़ अ स्टेशन जहाँ पे हम क्या अज्यूम करते हैं, दैट देर आर द पीपल हु आर गोइंग टू सेव अस फ्रॉम द फायर, राइट. कहीं आग लग गई तो वो आके आग बुझाएंगे, हम ये हमारा एक्सपेक्टेशन फायर स्टेशन से ये है, बट फायर स्टेशन में ही आग लग रही है. इट मीन्स द स्टेटमेंट here it is, we can clearly see that there is a contradiction. फायर स्टेशन में ही आग लग रही है. अ मैरिज काउंसलर मतलब जो जोड़ियाँ बनाता है. ओके, समवन हु coaches the people, or we can say he's someone professional who is patching up the couples. He's patching up the couple. Okay, 2 individuals को पैच अप करके कपल बना रहे अंडर सम गाइडेंस. ओके, सो गाइडेंस दे के उनको, ठीक है, कपल बनाना इज समवन हु इज़ अ मैरिज काउंसलर. बट मैरिज काउंसलर पैचअप करवाता है ये तो पता है हमें, बट ही इज़ ओनली फाइलिंग द डिवोर्स. कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है. समवन हु इज़ पैचिंग अप इज who is making the patch, what we can say couple, okay, who is coaching the people to patch up is someone, can't be someone who is at the same time filing the divorce. Contradiction दिख रहा है. Expectations क्या है? Couples बनाना, but कर क्या रहा है? डिवोर्स. कॉन्ट्राडिक्शन. पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब. पुलिस स्टेशन से एक्सपेक्टेशंस क्या है? वो थीव्स को पकड़ेंगे, रॉबरी बंद करवाएंगे या फिर क्राइम्स बंद करवाएंगे, बट पुलिस स्टेशन के अंदर ही रॉबरी हो रही है. इट मीन्स दिस इज अगेन अ स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन.
Okay, similarly next example देखना, a post on a Facebook complains about how useless Facebook is. For example, a person is using Facebook, okay, so he, if he doesn't likes the Facebook, simply is gonna uninstall it. Okay, but फेसबुक पे रह के ही फेसबुक के ऊपर ही एक पोस्ट डालना दैट फेसबुक इज़ लाइक वी कैन से फेसबुक के ऊपर ही पोस्ट डाल रहे कि स्टे अवे फ्रॉम फेसबुक, इट इज़ यूजलेस एंड ऑल. तो ये चीज़ इट इज़ अगेन अ कॉन्ट्रडिक्शन. ओके, अ पोस्ट ऑन अ फेसबुक, फेसबुक के ऊपर ही पोस्ट आ रहा है किस चीज़ का, यूजलेस फेसबुक है करके. सो दिस इज़ अगेन अ कॉन्ट्रडिक्शन. दिस इज़ एन आयरॉनिक बिकॉज वन शुड एक्सपेक्ट someone who dislikes Facebook to stay away from it instead of using it to make their point. Next example, this is again the examples of the irony itself. So a traffic cop gets his license suspended because of the unpaid parking tickets. So because the traffic cop is usually the one issuing the tickets, most of the people would assume he would follow the rules. Okay, khud he's a cop. Okay, he's getting his license suspended. It is showing the contradiction. Why? Because he is a traffic cop. He is a cop who is someone who is issuing the tickets, जो खुद लोगों को ticket issue करवाता है. Now he is only breaking the rules here. Okay, so this is again a contradiction. Similarly, a pilot has a fear of heights. This is again a contradiction. Why? Because airplane के अंदर pilots जो है काफ़ी ज़्यादा height पे रहते हैं और वही जो है प्लेन चलाते हैं, राइट. सो इफ ही इज हैविंग द फियर ऑफ हाइट, सो दिस इज नॉट द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ पायलट. द सिचुएशन इज आयरनिक बिकॉज द एयरप्लेन पायलट स्पेंड द मोस्ट ऑफ देयर टाइम एट वर्क हाई इन द एयर. सो उनसे हाइट का डर इज नॉट एक्सपेक्टेड. ओके, अ मेंबर ऑफ पेटा PETA wears a leather shoes. बेसिकली पेटा इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर कुछ ऐसे मेंबर्स रहते हैं जो एनिमल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं या फिर एनिमल्स को जो है प्रोटेक्ट करते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है, एनिमल राइट्स. फॉर एग्जांपल वेरियस लेदर शूज़ जो बनते हैं, लेदर बैग्स जो बनते हैं, लेदर जैकेट्स बनते हैं, तो उनके ऊपर प्रोटेस्ट लाना इनका काम है. ठीक है, मतलब उनके ऊपर बैन करना, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना पेटा के मेंबर्स करते हैं. सो पेटा का मेंबर ही अगर लेदर जैकेट इस्तेमाल कर रहा है, इट मीन्स दिस इज अगेन शोइंग अ कॉन्ट्रडिक्शन. Similarly, an English teacher has a poor grammar. In this statement, you are expecting, whenever listen about any English teacher, then you are expecting कि उनकी vocabulary, उनकी teaching skills, okay, at the same time उनका grammar अच्छा रहना चाहिए, right? But an English teacher has poor grammar. It means there is a contradiction in this statement again, because English teacher से हमें एक अच्छी grammar expected है, but यहाँ पे दिया है poor grammar. So it is again a contradiction. So this was end of today's lecture. मैंने जो कुछ भी रहे बाकी जो figure of speech थे, I have tried to cover them and I'll give you the PDF of this once you will watch the video. And मुझे जितने मैम या सर के नाम पता है, वन इज सचिन सर, मुस्कान मैम, ओके, ममता मैम, यू ऑल एवरीवन, और 2-3 स्टूडेंट्स है ग्रुप के. आई थिंक उनका कांटेक्ट नहीं हुआ. अगर नहीं हुआ, यू कैन जस्ट आस्क मी वॉट एवर द डाउट्स यू वांट सर, बिकॉज मेरे को सिर्फ इन 3 लोगों ने अभी तक डाउट पूछा है. स्टार्टिंग से ये बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड थे, स्पेशली मुस्कान मैम एंड ममता मैम. सो आई वॉन्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू लाइक गो थ्रू द क्लासेस रेगुलरली. ओके, साथ में जो PDFs मैं प्रोवाइड करती हूँ वो भी आपको पढ़ना है अच्छे से. एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग लैंग्वेज बैरियर, ओके, बिकॉज आई कैन टीच इन मराठी ऑल्सो, एंड इफ़ यू वांट दैट टाइप ऑफ लाइक थिंग देन लेट मी नो. बट ELCT का अगर कोई है इसके अंदर, देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इंग्लिश में ही पढ़ो, थोड़ा सा हिंदी भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसके अंदर. ओके, सो एवरीवन शुड लाइक गेट इन टच. ओके, आपका भी नाम आप मुझे कांटेक्ट करके बता सकते हो. कोई भी डाउट हो, आई एम देयर फॉर यू. ओके गाइज, सो दिस विल बी द एंड ऑफ टुडे सेशन एंड एवरीवन शुड वॉच. अगर कोई डिले भी पड़ चुका है तो पूरे वीडियोस देख लेना एक बारी, बिकॉज नाउ इट्स द पीक टाइम. यहाँ से आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है बिकॉज एग्ज़ाम अभी क्लोज है. ओके, सो मेक एवरीथिंग क्लियर, क्योंकि एग्ज़ाम के जैसे जैसे क्लोज आएगी तब हम जो है रिवीजन वाले कोर्सेस लॉन्च करेंगे, तब आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए. सो दैट आई वांट यू टू प्रिपेयर ऑल द वीडियोस विच एवर आई एम अपलोडिंग. ओके, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर रहना चाहिए, PDF पढ़ के रहना चाहिए,
कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो मुझे. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट. हैव अ ग्रेट डे एवरीवन. बाय.